Hello, good evening everyone. Am I audible to you all? Good evening. Please let me know in the chat box that I'm audible to you or not. Today we are starting with a new chapter which is nothing but probability. As you all know, it is an easier one. Weightage for this chapter is around 4 to 5 marks and you can easily solve each type of question from this chapter. But the only thing is that what should be used, what should be the working rule for each type of question, we just have to go through it, okay? So first of all, we are just checking that what is introduction of a probability. Whenever there will be many more options and result will be only one, then we have to use this probability. See, probability is nothing but what are the chances of occurring something? What are the chances of occurring something? The probability has been of all mathematician. So for that probability, we just have to go through the few basic concepts. Once you observe this basic concept, then you will easily get that when should be used, which term, and what is the significance of it. So first one is nothing but random experiment. Random experiment is nothing but it is an experiment in which all the possible results are known in advance, but they cannot be predicted in certainty. What is actually meaning of it? Experiment is nothing but what might be the result आप ये गेस कर सकते हो बट डेफिनेटली क्या होगा ये आपको पता नहीं है सपोज तुम्हारा कुछ मैच रहती है तो आपके साइड से क्या रहेगा या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे या फिर मैच हो जाएगी ड्रॉ ये जो फ्री आपको चांसेस मिल रहे हैं ये जो फ्री आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ये जो कोई और रिजल्ट नहीं मिलने वाला है गेटिंग दिस वन समझ में आ रहा है इतना बट आप ये फिक्स नहीं बोल सकते दैट कल मैच में हम जीतने वाले हैं गेटिंग मतलब आप मैच फिक्स नहीं कर सकते मैच फिक्सिंग इज नॉट अलाउड रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है वो सब आप पॉसिबिलिटी के बारे में बोलने वाले बट डेफिनेटली यही आपका रिजल्ट रहेगा ये आप नहीं बोल सकते ओके इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस मतलब क्या क्या मिल सकता है या आप गेस कर सकते हो बट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते डेफिनेटली यही रहेगा या बोल नहीं सकते ओके दिस इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट for example, rolling a die. If you just roll the die, then we know that there are six faces having number one, 2, 3, and so on up to 6. So what are the possibilities? Either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Okay. So all the possible results will be something like this. But you cannot put the die like this. With 6 should be at the afterwards. Then ये जो आपके सारे पॉसिबल रिजल्ट्स रहते हैं वी नो कॉल्ड इट एज आउटकम्स ऑल द पॉसिबल रिजल्ट जो आपको मिलते हैं उसे आप बोलते हो आउटकम द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ आउटकम इसमें से कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलने वाला है बट डेफिनेटली आपको नंबर मिला है विल से इट एज इट विल बी आउटकम ओके So number of all possible outcome is 6. Number of all possible outcome is 6. Here we assume that each outcome is likely to occur equally as well. मतलब ऐसा भी होता है क्या कि ये वाला आपका जो डाय है वो हमेशा आपको अपर पेज पे 6 ही नंबर देगा ऐसे कभी होगा क्या कि जो आपके पास डाय है वो हमेशा आपको अपर पेज पे 2 ही नंबर देगा नॉट लाइक दिस जो भी आपके पास ये 6 पेजेस मिलने वाले हैं वो सब के जो एज आउटकम मिलने के चांसेस थे वो इक्वली लाइक ओके हेंस 1 2 3 4 5 which is nothing but possible outcome जो आपके पास है इसे आप बोलोगे equally likely outcome it is known as a equally likely outcome done with this now we'll just go for the second test
all possible outcomes of tossing coin experiment. A coin is tossed. So there might be case that you consider two coins are tossed or three coins are tossed or one coin is tossed for three times and many more cases. Suppose a coin is tossed, then obviously there are only two possibilities, either head or tail, either H or T. Hence, you will say that number of all possible outcomes will be HT, which is nothing but number of all possible outcome will be 2. So what will be the case if you are considering that two coins are tossed together? What will be the case if two coins are tossed together? So always remember that either there is the case that two coins are tossed together or one coin is tossed for two times. Outcomes for both the cases will be same. Two coins are tossed together or one coin is tossed for two times. Outcomes will be same for both the cases. So if two coins are tossed, then suppose result on first coin is and result on second coin will be like this. क्लियर हो रहा है ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा या तो एच मिलने वाला है या आपको टी मिलने वाला है or we can say that suppose result of first coin will be like this but result of second coin will be then again result on first coin आप ये fix करो but result on second coin रहेगा आपके पास and the last case is that मतलब आप क्या कंसिडर कर सकते हो इधर एच एच रहेगा या फिर एच टी रहेगा या फिर टी एच रहेगा या फिर टी टी रहेगा so how many possible outcomes are there number of all possible outcomes will be 4 in this case number of all possible outcomes will be 4 in this case H H H T T H and T. Okay, the outcome, the all possible outcomes are same for this case. Okay, means one coin is tossed for two times. That is, one coin is tossed twice. It's same as two coins are tossed together. It's same as two coins are tossed together. Then usually there be cases of either related to die or tossing a coin. Next one. See, the next point is that three coins are tossed together or one coin is tossed twice. So the way we have done for the last is that two coins are tossed together, something like it. So just check. Suppose we will fix that for the first coin at the first time, we'll say that second coin, which is nothing but second time, or third coin or third time. Because we know that three coins are tossed together, it's same as one coin is tossed three times. Right? Hence, what you can see here, suppose you will get that heads on each and every coin. That is, we'll start with H, H, H. The second case is that suppose first two coins के लिए आपको H मिलेगा, but last के लिए आपको tail मिलने वाला है. Getting this one clear हो रहा है? Next आप क्या बोल सकते हो? First के लिए आपको H मिलेगा, but second के लिए आपको मिलेगा T and third के लिए मिलेगा H. And the last case is that something like this. Getting this one. Similarly, if we start with TTT and shift the position of H, we will get four more outcomes, right? What we have to do? That we have fixed here. The second case is something like this. So obviously there will be 8 outcomes. But what will be those three different outcomes and will be C. Rule to write possible outcomes. First of all, write possible outcomes of 2 points 2 times. Rule to write the possible outcome. First of all, write possible outcomes of 2 points 2 times. Means H H H T T H T T. You just have to repeat it once again. And after that, just put H T. T. Getting this one? In first time, put H as a result of 3 coin and for the second you just have to write P for 2 times. Getting this one?
समझ में आ रहा है ये? और देयर विल बी वन मोर केस, you can use that as well. We are talking about three coins, right? Either three coins are tossed together, but one coin is tossed, right? So, as there are three coins, which is nothing but S to H, obviously there will be either H or T. So, first of all, you will check that you are just fixing the result of first coin will be H. And after that, similarly, we can for the next one. Okay, done up to this. What we have done here, 4 times H, 4 times P. After that, you will consider 2 times H, 2 times P, 2 times H, 2 times P. Are you getting this one? What we are doing here, first of all, we have written 4 times H, 4 times P. Then for that, 2 times H, 2 times P, 2 times H, 2 times P. And after that, you will write 1 time H, 1 time H, 1 time T. Again, H, T, H. Okay, so this will be the total 8 outcomes for the random experiment. Either your three coins, either you are considering that three coins are tossed together or one coin is tossed thrice. Done up to this, getting this one. Okay. Now, for the next case, what you can check here as a next point, you will get that all possible outcomes of throwing two die, game of chance and playing cards. So probability is something related to, obviously there will be on types of random experiment. First one is something one coin is tossed or two coins are tossed and something like this. For the next case, you can say that one die is good or two dice are rolled and so on. And there might be few questions based on playing cards. Okay, so we'll just go through it. When two dice are thrown together, one and two, right? When two dice are thrown together, we just have to check that what will be the number on first die, what will be the number of face of the second die, and same for this. So consider the color of first die as a red and second die as a white. It's something like this. First thing is that we are see first one one, then फर्स्ट जो आपका डायल रहेगा उसके लिए वर्क हमने एज इट इज फिक्स किया है बट वी आर जस्ट चेंजिंग द नंबर on the page of second डायल. Third thing is that again we'll write 1 as the number of pages on the first die, but we'll write 3 here. Similarly, you can write 1, 4, 1, 5, 1, 6. Okay, done up to this. Obviously, there will be only 6 spaces. Then, what should we do here? Similarly, we can fix number on first die as a 2. So, you will get something 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Again, you can fix the number on first die as a 3. So you will get something like 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. And same for 4, 5 and 6. So what we have done here, we are just fixing first, we are just fixing the number on face of first die. That's it. So if you count this one, 6 times 6, which is nothing but 36. Hence, number of all possible outcomes for two dice are thrown together will be 36. In this experiment, the possible outcomes has to be written as same here. That is 6 outcomes in each row so that the calculation and further analysis will be easier using this. Okay. Now, for coin and dice, to know total number of outcomes, we can remember as follows. The total number of outcomes in one coin is 2. Total number of outcomes in two coins is 2 into 2, which is nothing but 4. Similarly, total number of outcomes in three coins is nothing but 2 into 2 into 2, which is nothing but 2 raised to 3. If you are considering that 3 coins, then 2 raised to 3. 2 coins, then 2 raised to 2. If you are considering n coins, then obviously its answer should be 2 raised to n. Okay.
Similarly, total number of outcomes, the case of one die will be 6. Total number of outcomes in two dice will be 6 into 6, which is nothing but 36. Okay. The next point is that what is game of chance? Because the probability is nothing but the way you calculate what are the chances, or many times you can say that will happen or not. So game of chance is something like this. Okay. We can see that there are total 8 numbers and you will just rotate this. Okay. You will just rotate this. We just have to check that ये जो आपको arrow मिल रहा है वो किस बर पे फिक्स होगा. अगर 4 पे होता है तो वो 8 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, राइट? So on whichever number the arrow points, that number is taken as an outcome of that experiment. ये रहता है आपका game of chance. Okay, so as you can see, how many possible outcomes are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there will be total 8 number of possible outcomes. Done. So the last part of introduction, which is nothing but playing card and event and finding probability of an event and something like this. See, what is the meaning of event? आपको प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में ये वर्ड कई बार मिलने वाला है. ऑब्वियसली नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दैट डिफाइन इवेंट और डिफाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड मेनी मोर थिंग्स. But event is nothing but set of favorable outcomes. What is the meaning of that favorable outcome? That something that you wish should happen or should not happen. For example, assume that in a situation we are just watching India versus Australia match and one ball is remaining and 5 runs are required to win. Are you reading this one? Good. Okay. One ball is remaining and 5 runs are required to win. Means something like this. So what are the chances? What do you think what will happen? आपको क्या चाहिए? Obviously हम ये बोल सकते हैं अगर इंडिया ने छक्का मारा then definitely we will win the match. समझ में आ रहा है? मतलब आपकी क्या विश है? आप ये चाह रहे हो कि 6 पिक करना चाहिए. ओके. इंडिया शुड पिक अ 4 एंड ड्रॉ द मैच. ये भी हो सकता है. क्लियर हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग जो चांसेस आपको मिलेंगे उसके बारे में हम बोल रहे थे. मतलब इवेंट क्या रहेगा जो आपको चाहिए, जो आपको ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर इधर विन or lose or draw. Any of these three could happen. Usually, events are denoted by the capital letters. That is, we can say that obviously हमें इंडिया जीत चाहिए, right? So let A be the event that India win. It means that A मतलब जो आप favorable outcome consider कर रहे हैं. Total number of outcome क्या थे आपके पास? Win, lose और draw. इस केस में favorable का मतलब क्या है? अगर इंडिया जीतनी चाहिए मतलब आपको favorable outcome मिलेगा win. समझ में आ रहा है? लेट बी बी द इवेंट दैट इंडिया डज नॉट लूज. उसका भी मतलब सेम ही है. कुछ भी हो जाए, अगर ड्रॉ होता है तो भी चलता है, बट सिर्फ हाथ जीतने चाहिए, ये आप बोलोगे. दैट लेट बी बी द इवेंट दैट इंडिया डज नॉट लूज. इन दैट केस आपके पास क्या मिलेगा फिर? यहाँ पे एज अ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम का मीनिंग क्या है? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. इंडिया डज नॉट यूज मतलब ये वाला ऑप्शन छोड़ के दोनों का आप यूज कर सकते हो. Hence, favorable outcome for this event will be 2, which is nothing but win and draw. Done up to this? Now, next, probability of an event. Probability of an event is just done as number of outcomes favorable to it divided by number of all possible outcomes of the experiment. Number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes of an experiment.
P stands for probability, bracket stands for जिस event के बारे में आप बोल रहे हैं वो वाला केस, and event is denoted by the capital letters. So ये आप कैसे करोगे? P of E. P of E is given as something like this. Okay. Now we'll just see actually what is the probability, how can we find it, and all the terms. See, what are the different types of event? What are the different types of event? The first one, rolling a die और कुछ आपको coins की पूछा जाएगा या फिर playing cards. उसमें से आप first consider करें rolling a die. So what are the possible outcomes? We know that अगर आप ये वाला case consider करते हो, then 1, 2, 3 and so on up to 6. Then we are considering an event such that we should get a number which should be less than 7. E is the event that a number less than 7 comes up. So number less than 7 मतलब क्या रहेगा? 1, 2, 3 and so on up to 6. So favorable outcomes to E will be ये जो 6 options आपको मिल रहे हैं सारे के सारे आप assume कर सकते हो all possible outcomes are present in an event because क्या मिला आपको favorable outcomes for E is same as all possible outcomes. If it is the case, then we'll put that event as a sure event or certain event. If number of all possible outcomes is same as not favorable outcomes, then we can say that we call that event as a sure event or certain event. Okay, and what will be probability here? Probability is nothing but number of outcomes in favorable divided by total number of outcomes, which is nothing but 6 upon 6, which is equal to 1. Hence, probability of sure event is always 1. अगर probability आपकी 1 मिलती है, then definitely आप उसे sure event बोल सकते हो या फिर certain. The next one is something like this. Again, we are considering a random experiment of rolling a die. And यहाँ पे आप check कर रहे हो that if is the event of getting multiple of 4. So we know that multiple of 4 is nothing but 4, 8, 12, 16 and so on. So what will be favorable outcomes here? आपके पास ये जो 6 outcomes थे, you just have to go through it, that which one will be multiple of 4. Obviously, there is only one outcome. There is only one outcome which is favorable for this case. So, if only one outcome is present in an event, then such event is called as an elementary event. Such event called as elementary event. Okay. So, what will be its probability? What do you think? P of f is nothing but number of outcomes in one divided by total number of outcomes. Yes, so it will be 1 because I can see there is only one outcome which is nothing but 4. So 1 upon total number of outcomes will be 6 here. Then A is an event of getting probability 1 upon 6. This will be the case. Again, B is an event of getting 2. So again उसके लिए भी आपको probability क्या मिलेगी? Getting 2 मतलब favorable outcome सिर्फ एक, which is nothing but 2. Suppose C आप consider करते हो कुछ आपको मिलना चाहिए 3 का, then probability of C will be 1 upon 6. अगर B आप consider करते हो कि आपको मिलना चाहिए 4, 4 should come sir, तो उसके लिए again आपको probability मिलेगी 1 upon 6. वैसे ही F is an event of getting 6, then इसके लिए भी आपको probability क्या मिलेगा? आपको 1 upon 6. Okay, so here sum of all possibilities मतलब A, B, C, D जो आप consider करना है, each and every number के लिए आपको probability मिलने वाला था 1 upon 6, and if you are considering 1 upon 6 for 6 times, it will give answer as a 6 upon 6, which is nothing but 1. Hence, we'll say that the sum of probabilities of all elementary events of an experiment is 1. ये जो आप elementary events के बारे में बोल रहे हो, उस event के लिए, उस experiment के लिए जितने भी आपके पास elementary events रहते हैं, उसका sum हमेशा आपको 1 मिलेगा. Done? Okay. Now we have third type of event. What we want for that rolling a die case.
G is the event of getting number greater than 8. G is the event of getting a number greater than 8. So obviously we have the numbers range 1 to 6. Is it any possibility कि आपको यहाँ पे 9, 10, 11 ऐसा कुछ मिलेगा? बोलो बच्चों. Obviously not. It means that there will not be any favorable outcome. It means that there will not be any favorable outcome. Hence, we'll call this type of event as an impossible event. If there will not be any favorable outcome, तो हम इसे बोलेंगे impossible event. P of G equals to, अगर एक भी आपके पास फेवरेबल आउटकम नहीं है देन ऑब्वियसली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो जीरो बन जाएगा. जीरो अपॉन total number of outcomes which is nothing but 6. So we'll say that its answer will be 0. Probability of impossible event will be 0. सबसे पहले हमने चेक किया था sure event या फिर certain event जिसकी probability आपको 1 मिलने वाली थी. उसके बाद हमने देखा था elementary event. अगर आपके पास favorable outcome में single event रहता है तब, and the third one is nothing but probability of impossible event जो आपको मिलेगा 0. Okay, now next step. See, again we are considering the same random experiment. So we know that for rolling a die there will be 6 different possible outcomes. So we just have to consider x is an event such that getting a odd number. अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो फेवरेबल आपको क्या मिलता है? देखो ऑड नंबर मीनिंग क्या रहेगा आपका 1, 3 एंड 5. सो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ x विल बी ईदर 1 or 3 or 5. And we'll consider another event y is the event of getting even numbers, that is 2, 4, 6. So outcomes of x and y are not same. Obviously जो आपको x की जगह पे मिल रहा है वो डेफिनेटली y के लिए फेवरेबल आउटकम नहीं है because we are considering even numbers and odd numbers. So outcomes of x and y are not same and together their outcomes give all possible outcomes. Outcomes of x and y are not same and together their outcomes give all possible outcomes of that experiment. Because 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने ही तो आपके पास outcomes है. Hence, we'll say that x and y are said to be complementary events. What are the necessary conditions for that? The first is, जो favorable event आपको x के लिए मिल रहा है, वो y में मिलना चाहिए. And second and important case, जो भी favorable outcomes x के रहते हैं, जो भी favorable outcomes y के रहते हैं, वो दोनों अगर आप मिला देते हो, then आपको पूरे possible outcomes मिल जाते हैं. Okay, so obviously, what will be probability of x here? Probability of x is nothing but number of favorable outcomes upon total number of outcomes. That is 1, 2, 3 upon 6. Probability of y will be 1, 2, 3 upon 6, which is nothing but 1 half. And we know that probability of x plus probability of y will give you answer as a 1 half plus 1 half, which is nothing but 1. ओके बट आप क्या बोल सकते हो? y is nothing but जो x में प्रेजेंट है वो y में प्रेजेंट नहीं है. जो y के लिए फेवरेबल है वो x के लिए नहीं है. सो वी कैन कॉल दैट y एज अ नॉट x. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग x. Hence, sum of probabilities of complementary event, sum of probabilities of complementary event is equal to 1 always. Is equals to 1. Now, just consider events. First, the देखा था certain event, probability of certain event is always 1. Probability of impossible event वो वाला ही नहीं है, इसके लिए तो हम उसे impossible बोलते हैं, करेक्ट? तो उसके लिए आपको probability मिलेगा हमेशा 0. Probability of any event lies between 0 and 1. 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता एंड 0 से लेस नहीं हो सकता. मतलब प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव और इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं और आपको कुछ आंसर नेगेटिव मिल रहा है या फिर ग्रेटर देन 1 मिल रहा है तो वहीं पे आप चेक करो कि डेफिनेटली इधर उधर कुछ मिस्टेक हुआ है. ओके, ये 4 चीजें अच्छे से याद रखें. अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, सी
Complete the following statements. Probability of an event E plus probability of not E. Probability of E plus probability not E, which is same as या तो E होना चाहिए या फिर E नहीं होगा. मतलब जो E के लिए आपको फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे वो नॉट E में नहीं जाएंगे एंड वाइस एंड वर्सा. बट इस टाइप के अगर इवेंट्स रहते तो आप इसे क्या बोलते हो? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमेशा क्या मिलता है? Okay. Now, second, the probability of an event that cannot happen is probability of the event that cannot happen is and such event is called the probability of an event that cannot happen. जो होने वाला ही नहीं है मतलब impossible है. Impossible अगर रहता है तो उसका probability zero and obviously that event को आप बोलते हो impossible event. सिमिलरली इसके लिए चेक कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन मतलब ये डेफिनेटली होने वाला है. अगर इस टाइप का कुछ केस रहता है तो उस इवेंट को आप क्या बोलते हो? या तो श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट. ये सारा थ्योरी हमने डिस्कस किया. ओके. अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू. तो आपको ये पता है कि जो भी आप किस भी टाइप की आप प्रोबेबिलिटी कंसीडर करो इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू 1 बट 0 से लेस नहीं रह सकता है 1 से ग्रेटर नहीं रह सकता. सो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इस टाइप का आपका रहेगा. ठीक है. सी a driver attempts to start a car. The car starts or does not start. वो अटेम्प्ट कर रहा है या तो स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा. अगर स्टार्ट होने वाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? नहीं होगी. इसके लिए चेक करो. सी द स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट बिकॉज आपको पता ही नहीं है ना और कुछ. ठीक है. नहीं. फॉर सेकंड वन फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन आप क्या बोलोगे? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कार और द ड्राइवर मतलब हम बोल ही नहीं सकते राइट. To say for an incomplete statement whether it is equally like outcome is not possible because आपको पता ही नहीं. Second क्या है देखो. A player attempts to shoot a basketball. He or she shoots or misses the shot. Again इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है. Again it will be an incomplete statement. Same for इसके लिए क्या बोलते हैं? A trial is made to answer a false question. The answer is right or wrong. तो अगर ट्रू फॉल्स टाइप के आपके क्वेश्चंस रहते या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा. ये दोनों छोड़ के और कुछ अलग आउटकम आपको मिलने वाला तो है नहीं. आंसर टू एनी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन इज आइदर राइट और रॉन्ग. इसी टाइप का कुछ मिलेगा आपको राइट. सो राइट होने का एंड रॉन्ग होने के लिए जो भी चांसेस है वो तो इक्वल रहते हैं. Hence, this experiment has equally likely outcome. Now, fourth one. A baby is born. It is a boy or girl. Whenever a baby is born, it is either boy or a girl. It means that again, ये जो आपको एक्सपेरिमेंट मिल रहा है ये भी equally likely मिलेगा. So for third and fourth आपको equally likely मिल रहा है. First two के लिए आप incomplete statement है ये रिजल्ट. Now. Which of the following cannot be probability of an event? आपको क्या पता है? Probability of any event lies between 0 and 1, right? Probability of any event lies between 0 and 1. तो इस केस में से कौन से probability रहते हैं वो सिर्फ चेक करो. आदर्श but correct good because second पे तो directly आपको minus sign मिल रहा है. So second one cannot be probability of any event. Good, very good. Now next case, probability of E is given as 0.05. Then what is the probability of not E? मतलब अगर E रखना है तो फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. बट वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी की एडिशन हमेशा आपको 1 मिलती है. सो वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E plus probability of not E is equal to 1.
सो प्रोबेबिलिटी जो आपको पता है वो सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट करो. सो योर आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 minus 0.0, which is nothing but 0.95. Okay. Hence, the required probability, that is the probability of not A, will be 0.95. If you want, then you can just uh, take its screenshot. Yes. Should we go on for the next question? So the next is nothing but finding the probability of either complementary events or sum based on marbles. It is given that in a group of three students, the probability of two students not having the same birthday is 0.992. Then what is the probability that the two students have the same birthday? अब इसका मतलब क्या रहेगा ये सबसे पहले आप चेक करो. जब भी आप प्रोबेबिलिटी के बारे में कंसीडर करते हो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये तो आपको बोलना है एंड जो भी कंडीशन दिए जाते हैं वो भी चेक करना है. So it is given that in a group of three students, the probability of two students not having the same birthday is something like this. अगर not having the same birthday का आपको पता है, then in the same birthday के लिए find out करना है. First event क्या दिया है देखो आपको, the probability of two students having the same birthday. So probability of first event is into you. Second one is nothing but probability of E complement. ये जो आपके रहता है डैश इट इज रेड एज अ कॉम्प्लीमेंट आदर्श गुड वेरी गुड गुड वन. So probability of e complement is nothing but two students not having the same birthday. So you have the value of p of e complement which is nothing but 0.992. Hence probability of e will be 1 minus probability of e complement which is equal to 1 minus 0.992 which is equals to 0.008. Hence the required answer will be this. बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं सिर्फ आपको समझना है एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट दे विल डेफिनेटली आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. मतलब कुछ पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को यूज करना ही पड़ता है. ओके. सेकेंड वन अगेन सेम टाइप का देखो अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. One marble is taken out of the box at random, then find the probability that the marble taken out will be either red or white or not green. मतलब अभी आपको probability find करनी है and if you have to find the probability of any event, then we just have to calculate the ratio of number of favorable outcomes divided by all possible number of outcomes. As the box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles, it means that how many marbles are there in that box, which is same as total number of marbles. So that number of possible outcomes is nothing but 5 plus 8 plus 4, which is nothing but 70. Okay, total number of possible outcomes is nothing but 5 plus 8 plus 4, which is nothing but 70. So what is the probability that the marble taken out will be? First आपको रेड के लिए कंसीडर करना है. Let A be the event type. See, presentation for this chapter is very much important. Okay. Let A be the event type. जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसी का यूज करोगे. We have to find the probability that the marble taken out will be red. So we consider that let A be the event that a red marble is drawn. That the red marble is drawn. So if it is a case, then what will be favorable outcomes for this? Number of favorable outcomes will be 5 because we know that out of those 17 marbles, there are only 5 red marbles. Hence, number of outcomes favorable to A will be 5. So we can say that probability of A is nothing but number of favorable outcomes divided by all possible number of outcomes. Hence, we say that probability of A will be 5 upon 70. Similarly, can you check that what will be probability of Y? Yes. What will be probability of
the marble taken out will be white. It means that you will just consider any event. Let B be the event that white marble is drawn. जो प्रोबेबिलिटी के आपको आंसर मिल रहा है यू कैन राइट इट इन द रैशनल फॉर्म ओनली ओके आपको पूरा हमेशा डेसिमल पॉइंट पे लेने की जरूरत नहीं है आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हो रैशनल में भी लिख सकते हो so probability of B is nothing but number of outcomes आपके पास कुछ 8 white cells so 8 upon 7 again easy one but next आप चेक करो not green का मतलब क्या है अगर रेड फाइंड आउट करना है व्हाइट फाइंड आउट करना है ग्रीन फाइंड करना है तो आप कर सकते हो बट नॉट ग्रीन का मतलब ये है दैट डेफिनेटली ग्रीन शुड नॉट बी देयर आदर्श ओके आई थिंक आपका सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आउटकम का वैल्यू चेंज हुआ था गुड सो not green it means that it should be either red or white but it should not be green मतलब रेड रहता है तो चलेगा व्हाइट रहता है तो चलेगा तो फिर आप फेवरेबल आउटकम क्या कंसीडर करोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विल बी 5 plus 8 which is nothing but 13 so for the last case see the number of favorable outcomes will be 13. Hence, we say that the probability will be 13 upon 7. Good, very good, correct. Okay, getting this one? Okay. We'll just go through another example. Hello, Riksha. Hello. So, now we'll just check the example which is based on the piggy bank. A piggy bank contains 150 pesos coin 51 rupees coin, 22 rupees coin, and 10 coins of 5 rupees. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, then what is the probability that the coin will be a 50 paise coin or will not be a 5 rupees coin? ठीक है आपको क्या करना है जब भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है सिर्फ ये चेक करो आपको रेशियो चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स करेक्ट सो विल बी अ 50 बेसिस पॉइंट इसके लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा दैट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको क्या मिलेंगे सो इन अ पिगी बैंक स्टेप का कुछ रहेगा 150 पैसे कॉइन आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और पॉसिबल वेज ऑफ आउटकम्स सो 150 पैसे कॉइन इज देयर 51 rupees coin 22 rupees coin and 2 rupees coin something like this okay good very good so what we have to consider here total number तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे करेक्ट अगर आप वो ऐसे टर्न डाउन करते हैं तो जो भी कुछ आपको मिलेगा वो आपको 50 पैसे वाला कॉइन होना चाहिए ये है कुछ आपका क्वेश्चन सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज नथिंग बट फर्स्ट के लिए 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस ओके गुड अच्छा वेरी गुड So total number of possible outcomes is nothing but आपको मिलेंगे total number which is equal to 180. Now next case is that we have to consider that we have to find the probability of when that the coin should be 50 paise coin. Hence we'll consider let A be the event that the coin will be a 50 paise coin. If it is a case, then what will we do? Number of outcomes favorable to A. फेवरेबल आउटकम मतलब अगर वो 50 पैसे का कॉइन रहता है तब भी आप लिख सकते हो तो उसके लिए टोटल आउटकम्स कितने हैं फेवरेबल आउटकम विल बी 100 so the required probability is nothing but 100 upon 180 so you can simplify this so you will get your answer as a 5 upon 9 that's it okay now next will not be a 5 rupees coin. What is the probability that the coin will not be a 5 rupees coin? Let B be the event that it is not a 5 rupees coin. It will not be a 5 rupees coin. It means that it should be either 50 paise or 1 rupees one or 2 rupees one. Correct? So, number of favorable outcomes for event B ये आपको क्या करना है 5
कॉइन 5 रुपीज की कॉइन का छोड़ के बाकी सब आप कंसिडर करोगे 50 पैसे 100 कॉइन्स 1 रुपीज के है 50 कॉइन्स एंड 2 रुपीज के है 20 कॉइन्स सो 100 + 50 + 20 which is nothing but 170 upon all possible number of outcomes which will be 180. Okay, so the required probability will be 17 upon 18 here. The required probability will be 17 upon 18 here. Now, next one. Probability, finding probability sum based on this. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at a random from the box, then find the probability that it bears a two-digit number or a perfect square or number divisible by 5. So if a box contains 90 discs, it means that 1, 2, 3 and so on up to 90 तक आपको जाना है. So obviously possible number of outcome को कितने मिलेंगे 90. ये कुछ इस टाइप से मिलने वाला है. So all the possible outcomes will be 1, 2, 3 and so on up to 90. Hence total number of outcomes will be 90. So probability that it bears a two-digit number. We know that out of these 90 numbers, only first 9 numbers will be of one digit. And जो remaining आपको मिलने वाले हैं मतलब first 9 छोड़ ये जो भी आपको remaining मिलेंगे 81 numbers वो सारे रहने वाले हैं two digit. Correct. So number of favorable outcome is nothing but 90 minus 9 equals to 81. Hence, probability of A is nothing but number of outcomes favorable to this event upon total number of outcomes. So we can say that its answer will be 81 upon 90. After simplifying this, you will get its answer as a 9 upon 10. Similarly, can we do it for the second one? Second case को क्या find out करना है? तो that is Beer's perfect square number. So from 1 to 90, how many perfect square are there? आपको सिर्फ वो check करना है. Let B be the event. This drawn Beer's a perfect square number. So we know that from 1 to 90, how many perfect square will be there? First is 1, then 4, then 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 5 के लिए 25, then again 36, 49, 64 and 81, right? So number of favorable outcome is nothing but 1, 4, 9, 16, 15, 36, 49 and 64 and 81. Hence number of outcomes favorable to event B is 9. Therefore, number of all possible outcomes will be number of outcomes favorable to B will be 9 and we know that number of all possible outcomes is 90. Hence the probability will be 9 upon 90 which is nothing but 1 upon 10. Which is nothing but 1 upon 10. Okay. Now third one, a number divisible by 5. So let's see with the event. This drawn bears a number divisible by 5. So जो आपके पास ये 90 numbers रहते हैं उसके लिए divisible by 5 which is nothing but 5 के multiple कितने हैं check करो 5, 10, 15, 20, 25, 30 and so on. Obviously ये कुछ मिलेंगे. So what will be the number of favorable outcome? Number of outcomes favorable to C will be 18. Number of outcomes to C will be 18. Hence probability is nothing but 18 upon 90 which is nothing but 1 upon 5. So it is the answer of this question. If you want to take screenshot, just go. Okay. Now next one. Just a minute. There is some technical issue.
मीनवाइल जस्ट चेक करते हैं हमने क्या क्या देखा था फॉर द फर्स्ट फ्यू सेस हमने चेक किया था दैट व्हाट इज श्योर इवेंट व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट एंड समथिंग लाइक दिस ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड झालं section okay so here we have the next question we have completed this question now next one we'll just try to go just try to check that question based on this step a bag contains a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out of one candy without looking into the bag. Then what is the probability that she takes out and this one? Okay. आप consider क्या करोगे देखो यहाँ पे that a bag contains lemon flavored candies only आपको find out करना था कुछ ये मैं as a solution, what we will consider, we just consider that there will be X number of candidates. There will be X number of candidates. Hence, total number of possible outcome will be X here. Total number of possible outcome will be X here, right? So, what is the probability that she takes out an orange flavored candy? कितने candies है को पता नहीं है. So let A be the event that candy taken out is the orange colored one. So आपको क्या पता है जो भी candies रहने वाले हैं वो सारे के सारे lemon flavored रहेंगे. So there will not be any orange colored one candy, orange flavored candy. So you will consider the favorable outcome will be zero. The favorable outcome will be zero here. Okay. So अगर number of favorable outcome is zero रहेगा then definitely its probability will be zero again. So probability of A will be zero. Probability of A will be zero here. Now next a lemon flavored candy. आपको ये पता है that उस बैग में जितने भी कैंडीज हैं वो सारे के सारे लेमन फ्लेवर्ड है then definitely उसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा x upon x because number of favorable outcome will be x here hence number of favorable outcome upon total number of outcomes so answer will be 1 if you want you can just go through this here. Okay, so we'll just go through the next question here. A bag contains three red balls, five black balls. A ball is drawn at a random from the bag. Then what is the probability that the ball drawn is red or is not red? आपको क्या पता है टोटल बॉल्स कितने रहने वाले हैं ये पता है मतलब
टोटल पॉसिबल आउटकम्स का नंबर आप बोल सकते हो। रेड कितने, ब्लैक कितने, ये भी आपके पास है। So, as a bag contains 3 red balls and 5 black balls, it means that total number of possible outcome will be 8. Let A be the event that the ball drawn is red. Let A be the event that the ball drawn is red. It means that अगर आपको find out करने हैं favorable number of outcomes, then favorable number of outcome will be 3 here. अगर favorable number of outcome रहता है 3, then obviously probability will be 3 upon 8. Now, second question that what is the probability that the ball drawn is not red? आपको ये पता है कि उस बैग में दो कलर के आपको बॉल्स मिलने वाले हैं, या तो रेड या तो ब्लैक, राइट? So let B be the event that the ball drawn is not red. It means that अगर वो red नहीं रहता है, definitely it will be a black colored ball. So number of favorable outcome will be 5 here. Hence probability of B is given as 5 upon 8. Okay. Next question. Some based on game of chance. See. सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या लेगा. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to the wrist pointing at one of the number 1, 2, 3 and so on up to 8, and these are equally likely outcomes. Then what is the probability that it will point at 8 or odd number and minimum is? सेम ये कैसा रहेगा, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था पहले, करेक्ट? तो आपको ये पता होता है अगर ऑफ चांस का ऐसा कुछ रहेगा देन देयर विल बी टोटल 8 आउटकम्स on whichever of the arrow points that number is taken as the outcome of that experiment. तो आपको ये पता है all possible outcomes आपको क्या मिलेंगे 1 2 3 and so on up to 8. Hence total number of possible outcomes will be 8. Okay, then what is the probability that it will point at 8? So we'll consider let A be the event that the number is 8. Let A be the event that the number is 8. So outcome favorable to it is nothing but ये जो पूरे आपके पास 8 नंबर रहने वाला है, फेवरेबल आउटकम तो सिर्फ एक ही रहेगा आपका. So number of favorable outcome will be 1 here. Hence probability of A is nothing but number of favorable outcome divided by total number of outcomes. It will be 1 upon 8. Similarly, for second case, आपको odd number चाहिए. If you will just look at it, how many odd numbers are there? There are total 4 odd numbers. Hence, outcomes favorability 1, 3, 5, 7. That is, total number of favorable outcome will be 4. Total number of favorable outcome will be 4. So that we will say that probability is nothing but 4 upon total, which is nothing but 4 upon it, which is nothing but 1 by 2. Next one. A number greater than 2. A number greater than 2. I can see there are total 8 numbers, but only 6 numbers are greater than 2, which are nothing but 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is number of favorable outcome will be 6 here. So if you want to find the probability of it, what you have to consider? Total number of favorable outcomes, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So it will be something 3 upon 4. It will be something 3 upon. Okay. Next, a number less than 9. So if you will just take a look on this, each and every number is less than 9. So अगर आप consider करोगे favorable outcome, what will be favorable outcomes here? 1, 2, 3, 4, 6 and so on up to 8. Number of favorable outcomes will be 8 here, as outcomes favorable to event B is 1, 2 and so on up to 8. Hence, favorable outcome total number रहेगा 8. So, probability of that event is nothing but number of favorable outcome divided by total number of outcomes, which will be 8 upon 8, which is nothing but 1. Done? समझ में आ रहा है ये? बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. सिर्फ जैसे मैंने आपको बोला प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
आप कौन सा इवेंट क्या कंसीडर करने वाले हैं ये केस। जब भी प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको टोटल आउटकम्स कितने हैं ये फाइंड करना। टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे ये सबसे पहले आपको करना होता है। सी अ डाई इज थ्रोन वंस, find the probability of getting a prime number or a number lying between 2 and 6 or an odd number. As a die is thrown once, it means that possible outcomes will be 1, 2, 3, 4, and so on up to 6. So total number of possible outcomes will be 6. Right? So first आपको क्या फाइंड आउट करना था, प्राइम नंबर से रिलेटेड। Let A be the event of getting a prime number. Let A be the event of getting a prime number. So outcomes favorable to A will be 2, 3, 5. Outcomes favorable to A are 2, 3, 5. That is, number of outcomes favorable to A will be 3. Hence, probability of A is nothing but 3 upon 6, which is equals to 1. Now, let B is the event that a number is lying between 2 and 6. तो 2 and 6 के बीच में करेंगे. It means that favorable outcome आपको क्या मिलेंगे? Favorable outcome is nothing but 3, 4, 5. Hence, number of favorable outcomes. Number of favorable outcome will be 1, 2, 3. Therefore, probability is nothing but number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Divided by total number of outcomes. Hence, it will be again 1 upon. And the third one, the way last question, that there should be odd numbers. So let's see with the event of getting an odd number. So what are the favorable outcomes here? Odd number means 1, 3, 5. So favorable outcomes will be 1, 3, 5. That is, number of favorable outcomes will be 3. Number of favorable outcomes will be 3. Hence, P of C is given as 3 upon 6. 3 upon 6, which is nothing but 1. So if you will just check it, तीनों भी जो आप इवेंट कंसीडर कर रहे थे सब जगह पे आपको क्या मिला था आंसर? Probability will be 1 half, 1 half, 1 half. Okay. Now try to solve this question on your own. A child has a die with 6 faces. Show the letters as given below. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड टाइप का है बट आपको क्लियर भी अगर क्या करना है समझ में आता है तो आप पाओगे. ठीक है, वर्किंग स्टेप वर्किंग रूल क्या रहना चाहिए देखो. A child has a die with 6 faces. Show the letters as given below. ऐसा कुछ मतलब क्या मिल रहा है आपको? ए बी सी डी ई ए ऐसा कुछ मिल रहा है. करेक्ट. अल्फाबेट रहेगा, अल्फाबेट रहेगा उसके फेस पे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है. A die is thrown once, then what is the probability of getting A or D, something like this. अगर सेम क्वेश्चन आपका कुछ ये रहता दैट रेगुलर डाई इज थ्रोन, देन ऑब्वियसली आप क्या बोलते हो, आउटकम रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6. So instead of 1 2 3 4 5 6 आपको मिलेगा A B C D E and A again. It means that A is repeated for 2 times here. ठीक है, कंडीशनल केस है बट आप कर सकते हो. जो भी आपके पास गिवन है 6 फेसेस पे जो भी अल्फाबेट्स आपको मिल रहे हैं वो सबसे पहले चेक करो. वही तो आपको मिलने वाला है एंड पॉसिबल आउटकम्स. पॉसिबल आउटकम्स विल बी ए बी सी डी ई एंड ए. दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम विल बी 6. बट फर्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए. लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए. अगर आप चेक करोगे पॉसिबल आउटकम के केस में या फिर यहाँ पे ए आपको 2 टाइम्स के लिए मिल रहा है. करेक्ट. तो फेवरेबल आउटकम आप क्या लिखोगे? ए कॉमा ए. दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ए विल बी 2. Hence probability of A is nothing but 2 upon 6. It is as easy as this.
ओके, सिर्फ जो आपको हमेशा देखने की आदत है उस वे में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, दैट्स नाउ फॉर द डी, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डी। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे डी आपको कितने टाइम के लिए मिल रहा था, ओनली वन टाइम, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी विल बी वन, hence probability of b will be total number of favorable outcomes divided by total outcomes, which is nothing but 1 upon 6, which is nothing but 1 upon 6. Okay, now next one, sum based on two dice। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी लग सकता है, इसके लिए अच्छे से देखिए। टू डाइस, वन ब्लू वन ग्रे, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इसके लिए जो हमने वो 36 डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स का वो जो टेबल था वो आपको याद रखना है। ओके, because अगर आप टू डाइस करते हैं तो दैट द आउटकम नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 36। आपको क्या चेक करना है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जहाँ पे फर्स्ट आपको मिल रहा है इवेंट सम ऑफ टू डाइस, मतलब जो भी आप ग्रे कलर का ब्लू कलर का टैग कंसीडर करने वाले हो, जो भी आपको नंबर मिलेगा उसका एडिशन इधर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा एंड सो ऑन अप टू 12, ये ऐसा कुछ मिलना चाहिए। गिवन थे आपके लिए 1 upon 36 and 5 upon 36 for if the sum will be 8 and the sum will be 12, then its probability will be 1 upon 36. But we know that if two dice are thrown, then different possible outcomes will be like this 36। क्या किया था हमने, अगर आप फर्स्ट रो कंसीडर करते हो तो वहां पे फर्स्ट डाई पे जो आपका नंबर मिलेगा वो हमने वन फिक्स किया था एंड सेकेंड डाई का नंबर चेक करने वाले, चेंज करने वाले थे। सेम 2 3 4 5 6 के लिए हमने किया, जो आपको फाइंड आउट करना था सम क्या रहेगा, मिनिमम 1 plus 1, 1 plus 1 is nothing but 2। तो 2 आपको कितने टाइम के लिए मिल रहा है, जो टोटल आपके पास 36 आउटकम्स थे उसके सिर्फ टाइम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 36। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको मिलेगा 1 plus 1 which is nothing but 2 and the biggest one will be 6 plus 6 which is nothing but 12। तो 12 आपको कितने टाइम के लिए मिलने वाला है, 6,6 से इवेंट आपको कितने टाइम के लिए मिलता है, गिवन टाइम के लिए, राइट। तो लीस्ट वैल्यू था 2, ग्रेटेस्ट वैल्यू था 12, इसके लिए आपको मिलेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नाउ व्हेन द सम ऑन डाइस इज 3, व्हेन द सम ऑफ टू डाइस इज 3, 3 आपको कब मिलेगा, इधर 2 1 के लिए मिलेगा या फिर 1 2 के लिए मिलेगा, मतलब जो भी आपके पास ये 36 आउटकम्स थे उसके लिए सिर्फ दो नंबर के लिए आपको मिलेगा। सो नंबर ऑफ favorable cases will be 1 comma 2 and 2 comma 1, but number of favorable outcomes will be 2 here, as the number of favorable outcomes is 2, therefore we can say that its probability will be number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, so it will be 2 upon 36। तो क्या ये आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक और कंडीशन हम चेक करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली आप लॉजिकली आते हैं। ओके, सी इफ यू वांट दैट सम ऑफ टू डाइस शुड बी 4, अब 4 आपको कहां मिल रहा है, देखो ये तो कैंसिल हो गया है, ये भी कैंसिल हो गया है, आपको 4 कहां पे मिलने वाला है, या तो अगर आप 1 3 कंसीडर करते हो तो रहेगा, या फिर 2 2 या फिर 3 1, 1 3 2 2 3 1, मतलब आपको फेवरेबल आउटकम्स कितने मिलेंगे, फेवरेबल आउटकम्स विल बी these 3, favorable cases will be 1 3 2 2 3 1, that is 3, hence you will say that probability of sum of two dice is 4 will be 3 upon 36, it will be 3 upon 36। सिमिलरली अगर आपको 5 के लिए करना होगा तो ये कुछ नंबर मिलेंगे, मतलब 4, so you will say that probability will be 4 upon 6। सेम फॉर अगर आपको 6 के लिए चेक करना है तो 6 के लिए देखो 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5, मतलब ये जो डायगोनली एलिमेंट आपको मिलते हैं,
डायगोनली एलिमेंट जितने भी आपके पास से मिलेंगे सबके लिए आपको सम सेम मिलने वाला है। अगर 6 चेक करते हैं तो 6 के लिए फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे कुछ ये 5, so as number of favorable outcome is 5, hence its probability will be 5 upon 36. Same for 7, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये ऐसा कुछ मिलेगा। As number of favorable cases is 6, therefore you will say that its probability will be 6 upon 36. Are you getting that pattern? समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? सो सेम 9 के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये चेक करो 9 मतलब 3 6, तो 3 6, अगर फर्स्ट आपको पार्ट मिल जाता है उसके बाद सिर्फ आपको डायगोनली चेक करना है 3 6 4 5 5 4 6 3, as favorable cases are 4, as favorable cases are 4, hence probability will be 4 upon 36, which is nothing but आप लिख सकते हो 1 by 9 as well. सेम फॉर 10, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, या तो फर्स्ट में या तो लास्ट कॉलम में आपको 10 कहां पे मिलता है वो सिर्फ चेक करो, ये ऐसा कुछ मिल रहा था आपको, करेक्ट? हेंस 4 6 5 5 एंड 6 4, ये जो आपके पास 3 आउटकम्स मिलने वाले हैं, these 3 will be the favorable outcomes here, hence probability is nothing but total number of favorable outcomes, number of favorable outcomes divided by total cases, which is nothing but 3 upon 36. And the last one, अगर आपको 11 चाहिए सब, then definitely आपको कहाँ पे मिलेगा, या तो 5 6 या 6 5 पे, hence favorable cases will be 5 6 and 6 5, therefore number of favorable outcomes will be 2, so the probability of sum on 2 dice is 11, which is nothing but 2 upon 36. Each and every test पे आपको ये पूरा लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, देखो लिस्ट नंबर 2 रहता है, ग्रेटेस्ट नंबर 12 रहता है, आप सब ज्यादा से ज्यादा 6 से आपके पास आउटकम है, याद कैसे रखना है, 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 12, ये आप कुछ मिलेगा 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 6 6 द जिमम नंबर, आपके पास टोटल 6 स्पेसेस रहने वाले, इसके लिए आप 1 2 3 4 5 6 बोलोगे, एंड उसके बाद अगेन आप डिसेंडिंग ऑर्डर कंसीडर करोगे, मतलब 2 to 12 अगर आपको जाना है, देन 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, दैट्स इट। लॉजिकली सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, सिर्फ लीस्ट नंबर 2 रहता है, मैक्सिमम नंबर 12 रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? The students use that there are 11 possible outcomes, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has 1 upon 11 probability. Do you agree with this argument? Then justify your answer. Obviously अगर 11 आपके पास है, then 11 sums आपको इक्वल नहीं मिलेंगे, राइट? जैसे आपने अभी देखा था दैट फॉर गेटिंग सम ऑफ 2 डाइस, अगर आपको 2 मिल रहा है, देन देयर इज ओनली वन फेवरेट नंबर, क्लियर हो रहा था ना आपको? यही जो आप टेस्ट कंसीडर करने वाले थे, कोई ऐसा बोल रहा था अगर टोटल 11 पॉसिबल है तो सब जगह पे आपको 1 अपॉन 11 करना है, बट इट इज टोटली रॉन्ग, राइट? अभी ये तो पूरा चेक किया था हमने, क्या किया देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 6 के लिए अगेन आप 5 4 ऐसा कंसीडर करोगे, सो इट इज ऑब्वियसली द बेसलेस argument. डन? नाउ नेक्स्ट वन, अब क्या होगा देखो, a die is thrown twice, then what is the probability that 5 will not come either time? 5 will not either time, अगर टोटल आपके पास 3 die is thrown twice, then again ये कुछ 36 आपको मिलते हैं, 5 is not come up either time, it means that first die पे भी 5 नहीं मिलना चाहिए, second die भी आपको 5 नहीं मिलना चाहिए, as the die is thrown twice, the total possible outcomes will be something like this, that is number of possible outcomes will be 36. Let A be the event that 5 will not come either time. So जहां भी आपको 5 मिल रहा है वो सब आप कर देते हो कैंसिल, ओके? सो 5 जहां पे है वो सब हम कर देंगे कैंसिल, देन हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर,
टोटल आपके पास थे 36, 36 में से आपने ये 6 माइनस किए हैं, ये 6 and 5. So number of outcomes favorable to A will be 25 upon 36, as number of possible outcomes was 36 and favorable outcomes will be 25. Hence, probability of A will be 25 upon 36. And next case is that 5 will come at least one. मतलब minimum एक बार तो 5 आना ही चाहिए, या तो वन टाइम या फिर टू टाइम्स. तो जो आपके पास 36 एटम्स है, हम सिर्फ चेक करेंगे कि 5 कहाँ पे मिलता है. ओके. So outcomes favorable to B is 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5 and ये भी आपके पास मिलेगा. Correct? So number of outcomes favorable to B is 11. Therefore probability will be 11 upon 36. Then last question for today's session, that is sum based on a bulb. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? ये पूछा ऐसे first. Total bulbs कितने हैं? 20. It contains 4 defective ones. So total possible outcomes आपके पास रहेगा 20. अगर defective bulbs है 4 and अगर आपको find out करना है probability of this bulb is defective, it means that आप event consider करोगे. Let A be the event that the bulb taken out is defective. Okay, then obviously as there are 4 defective bulbs, it means that the number of outcomes favorable to this event will be 4. अगर आपको probability find out करना है, then probability is nothing but number of favorable outcomes upon total number of, that is 4 upon 20. Hence, its probability will be 1 upon. Now second is, suppose the bulb drawn in one is not defective and is not replaced. मतलब जो भी आपके पास 20 बल्ब थे उसमें से आप कोई एक रैंडमली बल्ब वाले को कंसिडर, वो इट इज नॉन डिफेक्टिव. आपको ये पता है अगर 20 बल्ब है उसमें 4 डिफेक्टिव है, 16 नॉन डिफेक्टिव है. इट इज नॉन डिफेक्टिव मतलब नॉन केस रहेगा. Now one bulb is drawn at a random from the list. Then what is the probability that this bulb is non-defective? पहले आपको क्या पता था? टोटल नंबर्स जो 20 थे उसमें से आपने कोई एक किया है कैंसिल, then there will be only 19 bulbs. Now number of all possible outcomes is 19. As number of all possible outcomes is 19, therefore let B be the event that bulb is not defective. Not defective है, करेक्ट. सो जो आपको फाइंड आउट करना है, द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स विल बी 19 माइनस 4 व्हिच इज नथिंग बट 15, बिकॉज़ जो फर्स्ट में आपने निकाल के रखा है वो वाला तो आपका नॉन डिफेक्टिव बल्ब है. जो यहाँ पे आपको 19 बल्ब्स मिल रहे थे उसमें तो 4 डिफेक्टिव होते रहने वाले हैं. अगर आपको चाहिए नॉन डिफेक्टिव, देन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी 15. अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो फिर आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, which is nothing but 15 upon 90. Are you getting this one? As I told you, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी रहते हैं, बट सिली मिस्टेक होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है. तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ. वर्किंग रूल क्या रहेगा ये सब चेक करो. जब भी प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालो. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिलने के बाद जो भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो इवेंट कंसीडर करें. इसके लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहते हैं तो फिर कैसे फाइंड आउट करना है ये सब आप चेक करोगे. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. हैप्पी दिवाली एवरीवन. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.